तो इस वीडियो में हम लोग जो सुभाषु प्रकरण हमारा समाप्त हुआ है उसका उच्चारण करेंगे। गौरी श्रवः केतकपत्रभङ्ग माकृष्य हस्तेन ददन्मुखाग्रे विघ्नं मुहूर्ता कलितद्वितीय दन्तप्ररोहो हरतु द्विपास्यः क्रियाकलापप्रतिपत्तिहेतुं संक्षिप्तसारार्थविलासगर्भम् अनन्तदैवाज्ञसुतः स रामो मुहूर्तचिन्तामणिमातनोति तिथि शावन्यकौ गौरी गणेशो हिर्गुहो रविः शिवो दुर्गान्तको विश्वे हरिः कामः शिवः शशी नंदा च भद्रा च जया च रिक्ता पूर्णेति तिथ्यो शुभमध्यसस्ताः सिते सिते सस्त समाधमः स्युः सितज्ञ भौमार्किगुरौ च सिद्धाः नंदा भद्रा नंदिकाख्या जया च रिक्ता भद्रा पुरुषसंज्ञामृतार्कात् याम्यं त्वाष्ट्रं वैश्वदेवं धनिष्ठार्यमणं ज्येष्ठान्त्यं रविर्दग्धवं स्यात् षष्ट्यादितिथयो मन्दात् विलोमं प्रतिपद्बुधे सप्तम्यर्केदमाः षष्ट्याद्यामाश्च रदधावनि षष्ट्यष्टमी भूतविदुक्षयेषु नो सेवेतना तैलपलेश्वरं रतं नाभ्यञ्जनं विश्वदशद्विके तिथौ धात्रीफलैः स्नानममाद्रिगोस्वसत् सूर्ये सपञ्चाग्निरसाष्टनन्दा वेदाङ्गसप्तास्विगजाङ्कशैलाः सूर्याङ्गसप्तो रगगोदिगिषा दग्धा विशाख्याश्च हुताशनाश्च सूर्यादिवारे तिथयो भवन्ति मघा विशाखा शिवमूलवह्निः ब्राह्मं करुर्काद्यमघण्टकाश्च शुभे विवर्ज्यागमने तुभस्यम् भाद्रे चन्द्रदृशौ नवस्य नलनेत्रे माधवे द्वादशी पौषे वेदशरा इषे दश शिवा मार्गे द्रिनागामधौ गोष्ठौ चोभयपक्षगाश्च तिथयः शून्या बुधैः कीर्तिता ऊर्जा षाड्तपस्य शुक्रतपसां कृष्णे शराङ्गाब्धयः शक्राः पञ्चशिते शक्राद्र्यग्नि विश्वरसाः क्रमात् तथा निन्द्यं शुभे सार्पं द्वादश्यां वैश्वमादिमे अनुराधा द्वितीयायां पञ्चम्यां पितृभं तथा त्रयोत्तराश्च तृतीयायामेकादश्यां च रोहिणी स्वाति चित्रे त्रयोदश्यां सप्तम्यां हस्तराक्षसे नवम्यां कृतिकाष्टम्यां पूभा षष्ट्यां च रोहिणी कदा स्रवे त्वाश्रवायु विस्युज्यौ भगवासवौ वैश्वश्रुति पाशिपौष्णे अजपादग्निपितृभे चित्राद्विषौ शिवास्व्यर्काः श्रुतिमूले यमेन्द्रभे चैत्रादिमासे शून्याख्यास्तारा वित्तविनाशदाः घटो झषो गौर्मिथुनं मेषकन्यालितौलिनः धनुः कर्को मृगः सिंहश्चैत्रादौ शून्यराशयः पक्षादितस्तो जतिथौ धटेणौ मृगेन्द्रनक्रौ मिथुनाङ्गने च चापेन्दुभे कर्कहरिहयान्त्यौ गुन्त्यौ च निष्ठे तिथिशून्यलग्ने तिथयो मासशून्याश्च शून्यलग्नानि यान्यपि मध्यदेशे विवर्ज्यानि न दुष्याणीतरेषु तु पंग्वन्दकाण्डलग्नानि मासशून्याश्च राशयः गौडमालवयोस्त्याज्या अन्यदेशेन गर्हिताः वर्जयेत् सर्वकार्येषु हस्तार्क पञ्चमी तिथौ भौमाश्विनीं च सप्तम्यां षष्ट्यां चैन्द्रेन्दवं तथा बुधानुराधामष्टम्यां दशम्यां भृगुरेवतीं नवम्यां गुरुपुष्यं च एकादश्यां शनिरोहिणीं गृहप्रवेशे यात्रायां विवाहे च यथाक्रमम् भौमाश्विनीं शनौ ब्राह्मं गुरौ पुष्यं विवर्जयेत् आनन्दाख्यः कालदण्डश्च धूम्रो धाता सौम्यध्वांस केतुक्रमेण श्रीवत्साख्यो वज्रकमुद्गरश्च छत्रं मित्रं मानसं पद्मलुम्बौ उत्पातमृत्यु किलकाणसिद्धि सुमृताख्यो मुसलं गदश्च
मातङ्गराक्षश्चरसुस्थिराख्या प्रवर्धमानाः फलदाः स्वनाम्ना दास्रादरिके मृगादिन्दौ सार्पाद्भौ मेकराद्बुधे मैत्राद्गुरौ भृगौ वैश्याद् गण्या मन्दे च वारुणात् ध्वांसे वज्रे मुद्गरे चेषु नाड्यो वर्ज्या वेदाः पद्मलुम्बे गदेष्वाः धूम्रे काणे मौसले भूर्द्वयं द्वे रक्षो मृत्युत्पातकालाश्च सर्वे सूर्यभाद्वेद गोतर्क दिग्विश्वनख संमिते चन्द्रर्क्षेरवियोगः स्युर्दोषसङ्गविनाशकाः सूर्येर्कमूलोत्तरपुष्यदास्रं चन्द्रे श्रुतिब्राह्मससिज्य मैत्रम् भौमेस्व्यहिर्बुध्न्यकृशानुसार्पं गे ब्राह्म मैत्रार्ककृशानुचान्द्रम् जीवेन्त्यमैत्रास्व्यदितिज्यधिष्ण्यं शुक्रेन्त्यमैत्रास्व्यदिति स्रवोघम् सनौ श्रुति ब्राह्म समीरभानि सर्वार्थ सिद्ध्यै कथितानि पूर्वैः द्विषातो यात् वासवात् पौष्णवाच्च ब्रह्मात् पुष्यादर्यमर्क्षाश्चतुर्भैः स्यादुत्पातो मृत्युकाणौ च सिद्धिर्वारेरिकाद्ये तत्फलं नाम तुल्यम् कुयोगास्तिथिवारोत्थास्तिथिभोत्था भवारजाः पूर्णवङ्गखशेष्वेव वर्ज्यास्त्रितयजास्तथा सर्वस्मिन् विदुपापयुक्तनुलभा वरदे निशान्नुर्घटी त्र्यंसं वैकुनवांसकं ग्रहणतः पूर्वं दीनानां त्रयम् उत्पातगृहतोद्र्यहांश्च सुबधोत्पातैश्च दुष्टं दिनं षड्मासं ग्रहभिन्नभं त्यज शुभे यौद्धं तथोत्पातभम् निष्टं ग्रहर्क्षं सकलार्धपादग्रासे क्रमात्तर्कगुणेन्दुमासान् पूर्वं परस्तादुभयोस्त्रिघस्राग्रस्ते स्थगेवाभ्युदितेर्दखण्डे जन्मर्क्षमास्य तिथयो व्यतिपातभद्रा वैधृत्यमापि त्रिदिनानि तिथिक्षयर्धि न्यूनाधिमासकुलिकप्रहारार्धपात विस्कुम्भवज्रघटिकात्रयमेव वर्ज्यम् परिगार्धं पञ्चशूले षट्च गण्डातिगण्डयोः व्याघाते नवनाड्यश्च वर्ज्याः सर्वसु कर्मसु वेदाङ्गाष्टनवार्केन्द्र पक्षरन्ध्र तिथौ त्यजेत् वश्वङ्कमनुतत्त्वाशा शरानाडिः पराः शुभाः कुलिकः कालवेला च यमघण्टश्च कण्टकः वाराद्विघ्ने क्रमान्मन्दे बुधे जीवे कुजे क्षणः सूर्ये षट्स्वरनागदिङ्मनुमिताश्चन्द्रेऽब्धि षट्कुञ्जराङ् कार्का विश्वपुरन्दरा क्षितिसुते द्वयब्जग्नितर्कादिशः सौम्ये द्वयब्दिकजाङ्गदिङ्मनुमिता जीवे द्विषड्भास्कराः शक्राख्यास्थितयः कलाश्च भृगुजे वेदेषु तर्कग्रहाः दिग्भास्करा मनुमिताश्च सनौ शशि द्विनागादिशो भवदिवाकरसंमिताश्च दुष्टक्षणः कुलिककण्टककालवेलाः स्युश्चार्दयामयमघण्टकतः कलांशाः विपाशेरावती तीरे शुतुद्रयाश्च त्रिपुष्करे विवाहादिशुभे निष्टं होलिका प्राग्दिनाष्टकम् मृत्युकर्क च दग्धादीनिन्दौ सस्ते शुभाञ्जगुः केचिद्याम्योत्तरञ्चान्ये यात्रायामेव निन्दितान् अयोगे सुयोगोऽपि चेत् स्यात् तदानीमयोगं निहत्यैष सिद्धिं तनोति परे लग्नशुद्ध्या कुयोगाद्विनाशं द्विनार्धोत्तरं विष्टिपूर्वं च षष्ठम् शुक्ले पूर्वार्धेष्टमी पञ्चदश्योर्भद्रैकादश्यां चतुर्थ्यां परार्धे कृष्णन्त्यार्धे स्यात् तृतीया दशम्योः पूर्वे भागे सप्तमी सम्भुतिथ्योः पञ्चद्वयद्रिकृताष्टरामरसभूयामादिघट्यः सरा विष्टेरास्यमसद्गजेन्दुर्सरा माद्र्यश्विबाणाब्धिषु यामेष्वन्तघटित्रयं शुभकरं पुच्छं तथा वासरे विष्टिस्तिथ्यपरार्धजा शुभकरी रात्रौ तु पूर्वार्धजा कुम्भकर्कद्वये मर्त्ये स्वर्गे जे जात्र्ये लिगे स्त्रीधनुर्जूकनक्रेधो भद्रा तत्रैव तत्फलम् वाप्यारामतडागकूपभवनारम्भप्रतिष्ठे व्रतारम्भोत्सर्गवधु प्रवेशनमहादारानि सोमाष्टके गोदानाग्रयणप्रपाप्रथमकोपाकर्मवेदव्रतम् नीलोद्वाहमथातिपन्नशिशुसंस्कारान् सुरस्थापनम् दीक्षामौञ्जीविवाहमुण्डनमपूर्वं देवतीर्थेक्षणम् सन्न्यासाग्निपरिग्रहौ नृपतिसन्दर्शाभिषेकौ गमम्
चातुर्मास्य समावृत्ति श्रवणयोर्वेदं परीक्षां त्यजेद् वृद्धस्त्वा वृद्धत्वास्तस्य शुद्धैर्जसितयोर्न्यूनाधिमासि तथा अस्ते वर्ज्यं सिंहनक्रस्तजीवे वर्ज्यं केचिद्वक्रगे चातिचारे गुरुवादित्ये विश्वगस्त्रेऽपि पक्षे प्रोचुस्तद्वद्दन्तरत्नादिभूषाम् सिंहे गुरौ सिंहलवे विवाहो नेष्ठोत्तगोदोत्तरतश्च यावत् भागीरथी याम्यतटे हि दोषो नान्यत्र देशे तपनेऽपि मेषे मघादीपञ्च पादेषु गुरुः सर्वत्र निन्दितः गङ्गा गोदान्तरमिहित्वा शेषाङ्घ्रिषु न दोषकृत् मे शिर्के संवृतोद्वाहो गङ्गा गोदान्तरेऽपि च सर्वः सिंहगुरुर्वर्ज्यः कलिङ्गे गौडगुर्जरे रेवा पूर्वे गण्डकी पश्चिमे च षोडश्योदग्दक्षिणे नीचैज्यः वर्ज्यो नायं कोङ्कणे मागधे च गौडे सिन्धौ वर्जनीयः शुभेषु गोजान्त्यकुम्भेतरभेतिचारगो नो पूर्वराशिं गुरुरेति वक्लितः तदा विलुप्ताब्द इहाति निन्दितः शुभे सुरेवासुरनिम्नगान्तरे पादो न रेखा परपूर्वयोजनैः फलैर्युतो नास्ति थयो दिनार्धतः ऊनादिकास्तद्विवरोद्भवैः फलैरुर्धं तथा दो दिनपप्रवेशनम् वारादिर्घटिका द्विघ्नाः स्वाक्षरच्छेषवर्जिताः सैकास्तष्टानगैः कालहोरेशादिनपात्क्रमात् वारे प्रोक्तं कालहोरासु तस्य दिष्णे प्रोक्तं स्वामितिथ्यंशकेस्य कुर्याद्दिक्षूलादिचिन्त्यं क्षणेषु नैवोल्लिङ्गः पारिगश्चापि दण्डः मन्वाद्यास्त्रितिथि मधौ तिथिरवि ऊर्जेषु चौदिक्तिथि ज्येष्ठेऽन्ते च तिथिस्त्रिसेनवतपस्य स्वहसस्ये शिवाः भाद्रग्निश्च सिते त्वमाष्टनवसः कृष्णे युगाद्यः सिते गोग्नी बाहुलराधयोर्मदनदर्शौ भाद्रमागासिते शुभाशुभ प्रकरणम समाप्तम। यद्यपि मेरे को उतना छंदों का नॉलेज नहीं है, लेकिन मैंने आप लोगों को शुद्ध उच्चारण करवाने की कोशिश की, तो इसको पॉजिटिव वे में ग्रहण करिएगा। और इसमें से जो यद्यपि जो अगर ज्योतिष शास्त्र के जो छात्र है उनके लिए तो ये पूरा का पूरा शुभाशुभ जो प्रकरण है वही पूरा याद करने लायक है। और इसमें कुछ कुछ जगह पे इस पीडीएफ में गलती है, तो जो मैंने उच्चारण किया है वो मेरे को जो याद है शुभाशुभ प्रकरण उसके हिसाब से, क्योंकि मैंने मूल जो पुस्तक है, मूल जो ग्रंथ है उसमें से याद किया हुआ है, तो वो वहां पर शुद्ध है, तो वहां से आप लोग देख के साथ साथ में रिवीजन कर सकते हैं। धन्यवाद।